हेलो हाय नमस्कार मुझे चंद्रमणि आपको स्वागत करुँच प्रिय यूट्यूब चैनल नंदा नर्सिंग लाइव को। तो डियर फ्रेंड्स आपने जानी आम क्विक रिव्यू जो सीरीज चलती OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2022 आजिकार पार्ट 3 सीरीज आपको स्वागत करुँची मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करने पूर्व आपको गोटे रिक्वेस्ट रहा कि आपने आम चैनल को फर्स्ट टाइम देखुं तार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कहीं एमती OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हेल्पफुल कंटेंट आपको आम चैनल माध्यम समस्त अपडेट मिल जाए। तो निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके रखु एवं OSSC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट समस्त अपडेट आम चैनल माध्यम पातु। तो डियर फ्रेंड्स चलतु आजिकार OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2022 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को स्टार्ट करवा। तो डियर फ्रेंड्स पूर्व वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कशन करते OSSC एग्जाम रिव्यू और रिकल सीरीज 2 नंबर रे आम 50टा क्वेश्चन डिस्कशन करते आज पुणी 50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो चलतु आम आज क्वेश्चन नंबर 51 100 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो क्वेश्चन नंबर 51 अच्छी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द जनरल नर्सिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नर्स इज असेस्ड बाय। तो देखो तो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर सुपरवाइजर एंड एडवाइजर अच्छी। तो करेक्ट ऑप्शन हम सुपरवाइजर। So the directing and controlling the general nursing service provided by the nurse is assessed by supervisor. So supervisor assessed करती। The next question देखिबा the nurse can identify typical cases of DS by the sudden onset of refuse, effortless, watery diarrhea followed by vomiting। तो देखो चार्टा ऑप्शन दिया है। करेक्ट ऑप्शन हम कोलेरा। सो कौन अच्छी सडन onset of refuse, effortless and watery diarrhea means and by vomiting followed by vomiting जदि होची ताहले कोलेरा हबो। सो करेक्ट ऑप्शन हबो कोलेरा। देन क्वेश्चन नंबर 53 एन एपिड्यूरल हेमाटोमा रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लीडिंग बिटवीन द। सो देखंतु चारटा ऑप्शन अछि पैरामीटर एंड अरेक्नॉइड मैटर हबो करेक्ट आंसर। सो पैरामीटर एंड अरेक्नॉइड मैटर हबो करेक्ट आंसर। एन एपिड्यूरल हेमाटोमा रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लीडिंग बिटवीन द पैरामीटर एंड अरेक्नॉइड मैटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉर्बिडिटी मीन्स ऑप्शन 1 रे अच्छी इलनेस, ऑप्शन 2 रे अच्छी डेथ, ऑप्शन 3 रे अच्छी हेल्थ एंड ऑप्शन 4 रे अच्छी फर्टिलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन हम इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस इज ऑप्शन 1 अच्छी वाटर बॉर्न डिजीज, ऑप्शन 2 रे अच्छी वेक्टर बॉर्न डिजीज, ऑप्शन 3 रे अच्छी एयरबॉर्न डिजीज, ऑप्शन 4 रे अच्छी जूनोटिक डिजीज। सो करेक्ट ऑप्शन हम एयरबॉर्न डिजीज। सो ऑप्शन 3 इज द correct answer. Next question according to Erickson a sense of industry develops during option 1 रही infancy, option 2 रही toddler period, option 3 रही preschool age, option 4 रही school age. So correct option is school age. Option 4 is the correct answer. According to Erickson a sense of industry develops during school age. Option 4 is the correct option. Next question status epilepticus is a continuous seizure that lasts more than option 1 अच्छी 30 minutes, option 2 अच्छी 15 minutes, then option 3 अच्छी 45 minutes and option 4 अच्छी 1 hour. So correct option होगा option 1. So 30 minutes होगा correct answer. So status epilepticus is a continuous seizure that lasts more than 30 minutes. 30 minutes जो होगा seizure continuously. नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया इज ऑप्शन 1 रही हार्ट फेलियर, ऑप्शन 2 रही रेनल फेलियर, ऑप्शन 3 रही एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन 4 रही हेड इंजुरी। सो करेक्ट ऑप्शन हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो ARDS हम करेक्ट ऑप्शन ARDS। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया इज ARDS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 बाइपेरेटल डायमीटर इच ऑफ। देखो चार्टा ऑप्शन अच्छे चार्टा ऑप्शन डिफरेंट सेंटीमीटर्स दिखाई। तो करेक्ट ऑप्शन हम 9.5 सेंटीमीटर्स। तो बाइपेरेटल डायमीटर इज 9.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर इज बाय ऑप्शन 1 अच्छी टीचिंग, ऑप्शन 2 अच्छी लर्निंग, ऑप्शन 3 अच्छी कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 अच्छी इन्फॉर्मेशन। सो करेक्ट ऑप्शन हम टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन dexamethasone suppression test used to detect the option 1 अच्छी schizophrenia, option 2 अच्छी depression, option 3 अच्छी dementia, option 4 अच्छी stress. So correct option हबो depression. Dexamethasone suppression test used to detect the depression. So depression हबो depression वाला option हबो correct answer.
or dexamethasone sufficient test is used to detect the depression. Most important question, dear friends. Next question number 62. The type of necrosis seen in tuberculosis is option 1 रचे coagulative necrosis, option 2 रचे liquefacitive necrosis, option 3 रचे caseous necrosis, option 4 रचे gangrenous necrosis. So correct option होगा caseous necrosis. Option 3 is the correct answer. Next question number 63. Atrial natriuretic peptide ANP is hormone secreted from the cells, namely देखो चार्ट ऑप्शन दिया है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो करेक्ट ऑप्शन हम कौन राइट एट्रियम. So option 1 is the correct answer. Next question. The nurse notes a reddish pink tissue in the wound during dressing and interprets as option 1 is a sign of infection, option 2 is a keloid, option 3 is a granulous tissue, option 4 is a exudates. So correct option habo granulous tissue. So ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଉଣ୍ଡ ଡ୍ରେସିଂ କଲା ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ ହେଲା କି ସେ ଉଣ୍ଡଟା କି ରେଡିସ୍ ପିଙ୍କ ଟିସ୍ୟୁ ମିନ୍ସ ଗ୍ରାनुलेशन टिश्यू. तो किसी इन्फेक्शन नहीं, दैट इज ग्रानुलेशन टिश्यू माने वुंड हीलिंग होची. द नेक्स्ट क्वेश्चन 65. सोशल चेंज रेफर्स टू एनी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन 1 रही ह्यूमन रिलेशनशिप, ऑप्शन 2 रही ह्यूमन चेंज. सो क्वेश्चन नंबर 65 रही सोशल चेंजेस रेफर्स टू एनी मॉडिफिकेशन ऑफ. द करेक्ट ऑप्शन हम ह्यूमन रिलेशनशिप. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 रही द साइकेट्रिक नर्स शुड एसेस द पेशेंट cognitive status with the help of option 1 अच्छे mini mental status examination MMSE. Then option 2 अच्छे rating tool, option 3 अच्छे process recording, option 4 अच्छे advanced technology. तो correct option हवा MMSE जोटा mini mental status examination. Next question देखिबा. next question अच्छी the nurse notes a loud drum like sound during percussion of the stomach and documents as option 1 अच्छी tympani, option 2 अच्छी dullness, option 3 अच्छी resonance, option 4 अच्छी flatness. So correct option हवा tympani. Option 1 is the correct answer. The nurse notes loud drum like sound during percussion of the stomach and documents as tympani. So next question. Question number 68 अच्छी most important question. Umbilical cord contents of option 1 अच्छी 1 artery 2 veins, option 2 रची 2 artery 1 veins, option 3 रची 2 artery 2 veins and option 4 रची 1 artery 1 vein. तो यार करेक्ट ऑप्शन हबा कौन डियर फ्रेंड्स जे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबू एग्जाम रे ये क्वेश्चन आस्ता है. सो यार करेक्ट ऑप्शन हबा 2 artery 1 vein. सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन umbilical cord contents of 2 arteries and 1 vein. Next question number 69. The coverage of population by PSC. So here correct option haba 30,000. So PSC ra population coverage population total population 30,000. Then next question, the 2 umbilical arteries carry the dash from the fetus. So correct option haba deoxygenated blood. So the 2 umbilical artery carry deoxygenated blood from the fetus. So correct option about deoxygenated blood. Next question, the longest bone in human body is option 1 रची femur, option 2 रची humerus, option 3 रची tibia, option 4 रची fibula. So correct option about femur. So femur is the longest bone in human body. Femur is the longest bone in human body. Next question number 72. Dash is the permanent method of family planning. So permanent method of family planning in male कौन हबो टिबेक्टोमी, भासेक्टोमी, कपर टी एंड कंडोम. सो करेक्ट ऑप्शन हबो टिबेक्टोमी होची फीमेल मानक पई, तो भासेक्टोमी होची मेल मानक पई. सो करेक्ट ऑप्शन हबो ऑप्शन 2 भासेक्टोमी वाला ऑप्शन correct haba. So option 2 is the correct answer. Then question number 73. Swan gauge catheter is introduced to measure the option 1 rache intraocular pressure, option 2 rache intracranial pressure, option 3 rache blood pressure, option 4 rache central venous pressure. So correct option haba central venous pressure. So Swan gauge catheter is introduced to measure the central venous pressure. So option 4 is the correct answer. Next question number 74. The resistance of an individual possesses by virtue of his genetic and
constitutional make of each option 1 আছে active immunity, option 2 আছে passive immunity, option 3 আছে adaptive immunity, option 4 আছে innate immunity. So correct option is innate immunity. Next question, weight of the placenta at term each দেখুন তো চারটা অপশন আছে 250 গ্রাম, 125 গ্রাম, 500 গ্রাম, 350 গ্রাম. So correct option is 500 gram means half kg. Half kg the weight of the placenta at term. Next question, question number 76, an infection resulting from a treatment of diagnostic procedure each. Option 1 আছে nosocomial, option 2 আছে iatrogenic, option 3 আছে endogenous, option 4 আছে contagious. So correct option is iatrogenic. Next question, the complex spots commonly appear in, most important question here dear friends. The complex spots commonly appear in measles, mumps, varicella, smallpox. So correct option hoba kana measles re complex spot dekha jaye. So correct option is option 1. Next question, the main task of management is. Option 1 is decision making, option 2 is goal setting, option 3 is guidance, option 4 is authority. So yara correct option hoba kana guidance. The main task of management is guidance. Option 3 is the correct answer. Next question, in pediatric resuscitation the ratio between chest compression and ventilation is, most important question. 2:1, 3:1, 4:1, 5:1. So correct option kona hobo 3:1. In pediatric resuscitation the ratio between chest compression and ventilation, that is 3:1. So correct option is option 2. Question number 80, the nursing priority of child with acute renal failure is focused on. So देखो ऑप्शन देछि different option, चारटा option. So correct option हबो monitoring the intake and output chart. So acute renal failure रे कोन करबार अछि आपन को intake and output chart maintain करबार अछि, monitoring the intake and output chart the most important. Then question number 81, an activity which involves the development of hidden talent of its staff and for the benefit of the organization is known as. So correct option about training. Next question, question number 82, the emulsification of dietary fat is enhanced by. Option 1 is gastric disease, option 2 is saliva, option 3 is bile salt, option 4 is pancreatic juice. So correct option is bile salt. The emulsification of dietary fat is enhanced by bile salt. Option 3 is the correct answer. Next question, the killing power of the disease is measured by using case fatality rate. Then option 2 is specific death rate, option 3 is morbidity rate, then option 4 is survival rate. So correct option is case fatality rate. The killing power of the disease is measured by using case fatality rate. So option 1 is the correct answer. Next question, the vaccine used against tuberculosis, most important question. जहाँ भी क्वेश्चन आम डिस्कसन कर डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग OSSSC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट एग्जाम. तो निहाती भाव में समस्त क्वेश्चन स्टार्टिंग रु एंडिंग जाए देखंतु विदाउट स्किप करंतुनी, समस्त क्वेश्चन मन ध्यान दे शुणंतु देखंतु एवं जदि पर्यंत लाइक करना वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं ये वीडियो को शेयर कर दिंतु, जमती जो मैंने भी OSSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम रिक्रुटमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करते से पाखे पहुँची पार. तो निहाती भाव में निज निज सांग मान पाखु शेयर करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करने भूलुनि, निहाती भाव में सब्सक्राइब करके रखुँ. समस्त नर्सिंग रिक्रुटमेंट रिलेटेड वीडियो, नर्सिंग एजुकेशन वीडियो आम चैनल अपलोड हो आपको समस्त नोटिफिकेशन जमी मिल जाए. तो निहाती भाव में सब्सक्राइब करूँ. द वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस इज देखो DPT, OPV, MMR, BCG. सो करेक्ट ऑप्शन इज BCG वैक्सीन दिया हुए अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन. सो प्रिवेंट फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंट हवापाई BCG वैक्सीन चिल्ड्रेन को लगा हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल मोटिव्स. ऑप्शन 1 अच्छे हंगर, ऑप्शन 2 अच्छे थर्स्ट, ऑप्शन 3 अच्छे पेन एविडेंस and option 4 अच्छी achievements. So correct option हबो achievement. Achievement is the correct answer. Next question, question number 86, which of the following domain of competent caring are used in the psychiatric nursing practice. So देखंतु चारटा ऑप्शन दिया है. करेक्ट ऑप्शन हबो डायरेक्ट केयर, then communication and management. So option 3 is the correct answer. Next question, 87, administration of medication into the body tissue other than alimentary canal is. Option 1 is parenteral, option 2 is oral, option 3 is enteral, option 4 is induction. So correct option is parenteral. Administration of medication into the body tissue other than alimentary canal is, that is parenteral. So option 1 is the
correct option. Next question, the quantitative researcher gather option 1 আছে empirical evidence, option 2 আছে evidence based, option 3 আছে scientific method, option 4 আছে systematic approach. The correct option হবো empirical evidence. The quantitative researchers gather empirical evidence, so option 1 is the correct answer. Next question, World Health Day is celebrated on option 1 আছে May 12th, option 2 আছে April 7th, option 3 আছে April 1st, option 4 আছে January 26th. The correct option হবো April 7th. So April 7th is the World Health Day, so celebrated on World Health Day on the day of April 7th. Next question, question number 90, to acquire correct knowledge by the student, the teacher uses teaching strategy called option 1 আছে illustration strategy, option 2 আছে narration strategy, option 3 আছে problem solving strategy, option 4 আছে group discussion strategy. So correct option হবো illustration strategy. To acquire correct knowledge by the student, the teacher uses teaching strategy is called illustration strategy. Next question, question number 91, withdrawal of fluid from uterus through abdominal wall, option 1 আছে coulodoscopy, and then option 2 আছে laparoscopy, option 3 আছে amniocentesis, option 4 আছে partograph. So correct option হবো amniocentesis. Next question, question number 92, the storage temperature for polio vaccine, the storage temperature for polio vaccine, most important questions. So polio vaccine को केते टेम्परेचर रे स्टोरेज करा हुए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड रे स्टोरेज करा हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, इंक्रीज पल्सेशन इज फेल थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स एट 8th week इज कॉल्ड. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जति भी क्वेश्चन आम डिस्कसन करूँ सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन निहाती भाव में मन ध्यान दे शुणु एवं माइंड मेमोरी सेव करके रखु. सो इंक्रीज पल्सेशन इज फेल थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स एट 8th week इज कॉल्ड Oscinder signs. So option 1 is the correct answer. Next question, Indian MTP Act allows aversion only to a period of, most important question dear friends, 15 weeks, 20 weeks, 28 weeks, 12 weeks. So correct option is 20 weeks. 20 weeks भितर Indian MTP Act allows करा हुए aversion पाई. So only to a period of 20 weeks. So option 2 is the correct answer. Next question, osteoporosis is caused by the deficiency of, so there is iron, calcium, zinc, phosphorus. So ये भी most important question dear friends. So calcium होगा correct answer. Osteoporosis is caused by the deficiency of calcium. Next question, an area of poor houses and poor people is termed as. So correct option होगा कौन? Housing, slum, illiteracy, ventilation. So correct option होगा slum. An area of poor houses and poor people is termed as slums. So option 2 is the correct answer. Next question, hepatitis A infection spread by, most important question dear friends. Option 1 আছে oral route, option 2 আছে sexual route, option 3 আছে contaminated needles, option 4 আছে ER. So यार correct option হবে option 1. So oral route is the correct answer. Hepatitis A infection spread by oral route. Option A is the correct answer. Option 1 is the correct answer. Option 1 is the correct answer. Next question, 98, the scale helps to assess the impaired consciousness. Most important question dear friends, most important, very very important. The scale helps to assess the impaired consciousness. Option 1 is Glasgow Coma scale, option 2 is visual analog scale, option 3 is back depression scale, option 4 is muscle power grid scale. So correct option hoga Glasgow Coma scale. Next question, bone marrow depression is seen with chronic administration of, देखो isoflurane, then N2O, then ether, halothane. So correct option hobo halothane. Bone marrow depression is seen with chronic administration of halothane. Option 4 is the correct answer. Next question dear friends, last question. तो लास्ट क्वेश्चन जाना पूर्व जब वीडियो को लाइक करना ताले लाइक कर दिंतु एवं चैनल को एपर्यंत जब सब्सक्राइब करना एवं नुआ नुआ जब देखुं निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करके रखु कहीं एमती हेल्पफुल कंटेंट आम चैनल अपलोड हो आपको समस्त नोटिफिकेशन मिल जाए निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करूँ समस्त नर्सिंग रिक्रुटमेंट रिलेटेड वीडियो समस्त नर्सिंग एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आम चैनल माध्यम पाइजे कॉम्पिटिटिव वीडियो जो आपण मानकर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन पाई जो जी भी आम अपलोड करुँ वीडियो माध्यम आपण मानक मैंने प्रिपरेशन करुँ निहाती भाव में आपको मिल जाए नोटिफिकेशन तो निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु समस्त नोटिफिकेशन आम चैनल माध्यम आम चैनल रू मिल जाए तो देखो डियर फ्रेंड्स ए पर्सन विथ टेंडेंसी टू बी आउटगोइंग फ्रेंडली एंड टॉकेटिव इज सेड टू बी एन
ऑप्शन 1 अच्छी ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन 2 अच्छी पेसिमिस्ट, ऑप्शन 3 अच्छी इंट्रोवर्ट, ऑप्शन 4 अच्छी एक्सट्रोवर्ट। तो यार करेक्ट ऑप्शन हम एक्सट्रोवर्ट। So a person with tendency to outgoing, friendly and talkative is said to be an example of extrovert. So correct answer is extrovert. तो डियर फ्रेंड्स आज वीडियो जदि आपको हेल्पफुल लगी निहाती भाव में लाइक कर दिए और शेयर कर दिए आप निज निज सांग मान पाक जमी पहुँची पार और चैनल को सब्सक्राइब करके जी डियर फ्रेंड्स निहाती भाव में सब्सक्राइब करूँ कहीं आपण प्रयास और से निहाती भाव में लाइक करेंगे शेयर करेंगे निहाती भाव में सब्सक्राइब करके रखु समस्त हेल्पफुल कंटेंट आम चैनल माध्यम आपको मिल जाव। तो आज का वीडियो ये नेक्स्ट वीडियो पुणी थोड़ा देखा एक नुआ इनफर्मेटिव वीडियो सहित नुआ हेल्पफुल कंटेंट सहित से टेक केयर एंड बाय बाय।